yesterday's session? Yes, sir. So in the yesterday's session, we have completed till info group modifier. We have seen that how can we set the different values of info group modifier. Okay, so let's get started with this one. SPRO, SAP reference IMG screen, personal management, personal administration. In personal administration, we go to the customizing procedure. In customizing procedure, we generally go to info, one second, actions. In actions, here we have defined all the three values. Generally, first we have set up user group dependency on menus and info group. Then we have set up info group, separate individual info groups, and then we have went on to the info group modifier to set up the default values, right? So here we have defined, for an example, uh, return value as same in all the cases. Now your question, आपका जो question था कि why we are defining this return value, why we have to write this return value at the first place. See, I'll give you a requirement. Okay. Now requirement is as such. Let's say just assume this thing. Mm, if ABC company is hiring, if ABC company is hiring, let's say permanent hourly employee, permanent hourly employee. It means which one? Here, which one? It will be even, right? Permanent and hourly, even, right? Then, while hiring that employee, let's say communication info type, which is the communication info type IT 0105. Communication info type should not should not be executed, not be executed. Okay, but if ABC company is hiring, let's say permanent salaried employee, let's say permanent salaried employee, same company, permanent salaried employee E2, then while hiring, communication info type should be included. Communication info type should be included and created. Should be included and created. This is the requirement that we are having. So I am saying that let's go to this one again. If I am hiring E1 employee, then the communication info type should not be included in the while performing the hiring action in the BA40.
But if I'm hiring any employee who is a salaried but permanent, then the 105 info type should be included. What should I do in this case? So in such a case, so here we are talking about the hiring action. It means 1A. Again, we have set 1A for hiring. I'll set up a very different type of a return value. What I will do, I will copy all of these fields. Let's copy them. One second. Just a second. And let's say I've set up something like SSSSS. And this one I don't want. Save. Go back. As of now, it will not show me the combined value. Now it shows me the combined value. So see, I don't want a communication info type for which one? I don't want a communication info type for what? While executing the hiring action, let me bold this one. Let me also keep this one on bold. Uh, Even employees, E2 employees. So in this case, in the previous case, if the employee is of even category, then the communication info type should not be included. So let's exclude this one. So now in the info group modifier, what I will do for the even category of employees, for the even subgroup subgroup employees, I will set it up the return value as this one. Whereas for the other employee, that is E2, the return value is already set it up as this one, pibcure. Okay, in which I'm calling the communication info type. I hope you must have got an idea about what I'm trying to achieve over here. What was the requirement and what we were trying to do over here. Any doubt? So here what I will do, see, here I will change the return value. Transfer, save, check, activate. Now whenever I will be hiring an employee, किसी भी employee को मैं hire करूंगा, if he belongs to even category, अगर मैं उसको अगर मैं hourly permanent employee को hire करूंगा, तब उसका communication info type create नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए जो मैंने info group set किया हुआ है, उसके अंदर जो मैंने रिटर्न वैल्यू उसके अंदर डाल के रखी हुई है, उसके अंदर ये वाले इन्फो टाइप्स ही एग्जीक्यूट होंगे सर. ये नीचे वाले इन्फो टाइप्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये देखो यहाँ पे व्हाट डज इट मीन बाय द इन्फो ग्रुप मॉडिफायर. यहाँ पे मैं इन्फो ग्रुप मॉडिफायर की वैल्यू सेट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं इन्फो ग्रुप मॉडिफायर की वैल्यूज क्रिएट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वही इन्फो ग्रुप मॉडिफायर की वैल्यूज को सेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन टू द डिफरेंट एम्प्लॉय ग्रुप्स. सो जैसे परमानेंट आवरली एम्प्लॉय के लिए मैंने ये सेट किया है, वैसे ही वैसे भी अपन ये मान सकते हैं कि लाइक लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट आवरली के लिए अपने पास में कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट है. सो वी कैन ऑल्सो सेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू ओवर देयर
and we can then check onto our own convenience basis that okay which are the info types जिसको कॉल करवाना है और which are the info types जिसको कॉल नहीं करवाना है. Okay, so this you will understand by practice. So once you will practice such kind of scenarios, then you could be able to understand it in a more better way. अच्छा, हायरिंग तो इंडिया रिलेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए ही हो रही है सारी के सारी, बट उसके अंदर भी मुझे सेग्रीगेशन क्रिएट करना है. मैं चाह रहा हूँ कि परमानेंट एम्प्लॉय जो कि आवरली हैं उनके लिए कम्युनिकेशन इन्फो टाइप कॉल नहीं होना चाहिए, बट सैलराइड एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए. तो those sort of things I can be able to set up through the help of return value. Okay, so the next topic is personal action types. Personal action types. So अभी ये कल का configuration खत्म नहीं हुआ है. Okay, so after setting the info group modifier values, we generally have to go over there and create a types of personal actions. Different types of personal actions. Where do we do that? Here we can see that create set up personal actions. So this will be the next field. Set up personal actions, personal action types. So here we can define it as after actions, set up personal actions, personal action types, जितने हमने info group कल create किए थे, how many of the info groups we have created these many info groups. उन सभी के लिए मुझे personal action type एक अलग से create करना पड़ेगा. So let's see how do we do that and why we are requiring to create a personal action types. What is the requirement to create a personal action types? See, the reason to create a personal action type is, let's go into the new entry. Let's first talk about 1A. Okay, 1A कौन सा action है? 1A is an hiring action. Where do I define 1A over here? Generally 1A would be defined over here in info group, this field IG which is known as info group. So यहाँ पे मैं define करूँगा 1A. मैं यहाँ पे define करना चाह रहा हूँ कि ये जो action type मैं create कर रहा हूँ ये hiring action type होगा. Okay, this field I can name any digit over here, but let's say I just wanted to take a number as 6A. Okay, I can take 7A as well, I can take 7 as well, but like okay, as per the naming convention in the current system it is available to me, so this is more suitable for me. You can take any naming convention, that is fine. So this is the hiring action, hiring star star. Now what is this F पैरामीटर? देखो सिस्टम में ये पता कैसे चलेगा कि कौन से एक्शन के ऊपर पर्सनल नंबर क्रिएट करना है या एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करना है. अच्छा क्या मैं टर्मिनेशन, अच्छा क्या मैं प्रमोशन, ट्रांसफर, सैलरी इंक्रीमेंट, टर्मिनेशन या रिहायर पे एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करूंगा क्या? एम्प्लॉय आईडी मुझे क्रिएट करने की जरूरत है क्या उन सब एक्शंस के अंदर? नो राइट, सिर्फ एक ही बार मैं एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करूंगा राइट. दैट that is during the initial hiring, that is during the initial hiring only. So see, you can also check it from your end, like you can keep the cursor over here and you can do F1 and then it will give you. So what it tells you, first hiring what it means is that कि पहली बार हम किसी को हायर कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, लाइक आई मीन दैट एम्प्लॉई जो उसके अंदर हायर होगा उसका ये फर्स्ट एक्शन है, and that's why we want to create a personal number. That's why we just wanted to keep this as 1. In all the rest of all the cases we'll keep it as 0. Other,
अगर ग्लोबल असाइनमेंट या फिर रिक्रूटमेंट रिलेटेड चीज़ें होती है तो वी जस्ट जनरली गो फॉर द अदर ऑप्शंस. बट इन अदर केसेस जनरली टर्मिनेशन एक्शन हुआ या ट्रांसफर हुआ, रीहायर हुआ, जितने भी अलग एक्शंस हैं उसके अंदर हम उसको जीरो ही रखेंगे. Okay, so that these are the special types of checks that you have to perform over here. Okay, you can keep this field as blank, you don't have to worry about this field. This is again for some special scenarios. Employment status. Generally employment status आप यहाँ पे देखोगे कि like whenever generally whenever it is about the regular like generally whenever it is about the regular employment you always wanted to keep it as 3. Okay, but let's say in the case of termination generally you can go with special status 0, that is no entitlement, or like in this case 0, that is employee is not with the company. Okay, but like we have generally kept it as 1 over there, so employee is active in the company, that is the option number 3. I'm saying the employee will be active in the company, so that's where we have to select option number 3. I'm saying employee will be active in the company. Specification or special payment status as 1, special payment wage type. जनरली ये स्टैंडर्ड ही फील्ड होती है हर सिस्टम के अंदर, इसको ऐसे ही रखा जाता है. नाउ वाइल परफॉर्मिंग हायरिंग एक्शन, क्या पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, एम्प्लॉय ग्रुप, सब ग्रुप अफेक्ट होने चाहिए? यस, वी वांट द चेंजेस टू बी गेट अफेक्टेड. इससे क्या होगा, जब भी हम हायरिंग एक्शन परफॉर्म करेंगे तो पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, एम्प्लॉय ग्रुपिंग, एम्प्लॉय सब ग्रुपिंग का जो डेटा होगा वो फैचअप करेगा सिस्टम. ओके, एंड इफ इन केस जब हम हायरिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो लेट्स से आज मैंने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, क्या सिस्टम में उसका रिकॉर्ड प्रोड्यूस होना चाहिए या सेव होना चाहिए? कहाँ सेव होना चाहिए? सो देर आर स्पेशल इन्फो टाइप्स फॉर दैट. Those info types are generally 40, which is known as nothing but an action info type, and the another one is 0302. अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो जब भी मैं किसी भी एम्प्लॉय को सिस्टम के अंदर हायर करूंगा या फिर उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करूंगा उसका रिकॉर्ड वहां पे सेव होगा. दैट्स व्हाट इट मींस जनरली. Similarly, I can now take it for 6B. Let's say 6B is the naming convention that I'm doing, and this is for promotion action. Promotion action. So let me name it as promotion star star. Acha. What should be the functional character for this one? क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए क्या? 1 होना चाहिए क्या? प्रमोशन के केस में क्या होना चाहिए? सॉरी सॉरी, 1 तो नहीं होगा प्रमोशन. इट विल बी 0. ओके, ये अदर एक्शन, इट विल ऑलवेज बी अदर एक्शन. यही तो डिफरेंस हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन हायरिंग एंड द ऑल द अदर एक्शंस व्हिच आर देयर इन प्लेस. सो चाहे प्रमोशन हो गया, चाहे ट्रांसफर हो गया, चाहे सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, दोज विल बी काउंटेड एज अदर एक्शन. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगेन एक्टिव है, राइट? एम्प्लॉई एक्टिव इन द कंपनी. भले मैं प्रमोशन परफॉर्म कर रहा हूँ बट एम्प्लॉय तो एक्टिव ही है ना. एंड स्पेसिफिकेशन स्टेटस अगेन विल बी 1. इम्पैक्ट होने चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम डिफाइनिंग ओवर हियर, एंड दिस शुड आल्सो गेट इम्पैक्टेड. Similarly, I can create it for transfer action as well. Let's say अगर मेरे को किसी का डिपार्टमेंट ट्रांसफर करना हो तो ट्रांसफर स्टार स्टार 0. Employment status has 3. Special employment status as 1. Again, all the fields should get affected, and the info group value should be 1C. Again, in this case 1C. मैप कर रहा हूँ मैं. ओके,
यहाँ पे मैं पर्सनल एक्शन टाइप्स, कुमुलेटिव पर्सनल एक्शन टाइप्स क्रिएट कर रहा हूँ बाय टेकिंग द इन्फो ग्रुप्स जो मैंने कंसिडर बनाए थे। अच्छा, इन्फो ग्रुप से मैं क्या कर रहा हूँ? इन्फो ग्रुप से मैं दो चीज़ें फैच कर रहा हूँ कि जब भी मैं ये ट्रांसफर एक्शन रन करूँगा तो कौन कौन से इन्फो टाइप बैकग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट होने चाहिए, ओके, एंड किस ऑपरेशन से एग्जीक्यूट होने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अपन ट्रांसफर के अंदर अपन ने कल देखा था कि वी वर यूटिलाइजिंग कॉपी और डिस्प्ले एक्शंस, और सॉरी, डिस्प्ले ऑपरेशंस, राइट। while in the case of hiring one a info group के अंदर हम create कर रहे थे, we were using ins, right? So ins is for create. Keep these field as active that I want it to be get impacted. Let's talk about 6D. क्या है? Salary increment. Star star. 0, 3, 1 only. Check, check, check. 1D. Salary increment action. I want to keep both of these field active. Next up, after termination, after salary increment, it's the termination action. 6C. Termination. अच्छा, अब टर्मिनेशन के केस में क्या होना चाहिए? ये क्या होगा? What should be the FC parameter in the case of termination? क्या होना चाहिए? इट विल बी जीरो ओनली, क्योंकि वही ऑप्शन है। फर्स्ट हायरिंग तो नहीं, हायरिंग तो कर नहीं रहे हैं हम किसी भी तरह की, ना हम कुछ और डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के अंदर, ना हम कुछ अलग ग्लोबल कंपनी असाइनमेंट कर रहे हैं, ग्लोबल एम्प्लॉयज असाइन कर रहे हैं। वी आर डूइंग अदर टाइप ऑफ एक्शन ओनली, जीरो, राइट। बट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या होना चाहिए इस केस के अंदर? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या होना चाहिए इस केस के अंदर? रिमेंबर, वी आर टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉय नाउ। inactive, सॉरी, inactive होना चाहिए. इनएक्टिव होगा ना, तो कैन आई टेक जीरो? एम्प्लॉय नॉट विद द कंपनी, राइट? एम्प्लॉय इज नो लॉन्गर विद द कंपनी, जीरो। दूसरों के केसेस में मैं क्या कर रहा था? मैं 3 ले रहा था, दैट इज एम्प्लॉय इज एक्टिव। देखो, सैलरी इंक्रीमेंट करूं, ट्रांसफर करूं, प्रमोशन करूं, हायरिंग करूं, एम्प्लॉय तो एक्टिव ही है ना सिस्टम के अंदर, ही इज स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल वर्किंग। बट इन द केस ऑफ termination, what I am doing, I am exiting the employee. Employee is no longer working with the organization, so that's why I will maintain it as zero. Zero, that is employee not with the company. Zero. Here, special element character would be zero as well. Special payment status will be zero as well. अच्छा, ये आप इसको लेके कंफ्यूज मत होना। देखो, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट ये जो थ्री ऑप्शंस दिखा रहा है ना यहाँ पे, व्हाट इट मीन्स इज दिस कस्टमर defined or customer specific stat is this one, these options, the first part. This is employment status, so we will consider the, like, यहाँ पे हम जितनी भी फील्ड भर रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ से उसका मतलब यहाँ से अपन रेफरेंस लेंगे, ओके। सो लाइक whenever you are entering anything in the employment section, you have to take the reference from the employment field only, and this special character status is here, this one, the third part, okay. So the by I mean they've maintained the I mean these three fields, they have maintained the one documentation only, so don't get confused. This entire part is this one, customer specific. If you keep it as blank, that is also fine,
This entire part, that is the second one, is this one, the employment. And these are the options 0, 1, 2, 3, right? We have selected 3. Why? Employee was active. Then we have selected here 0. Why? Employee was terminated. Employee was not with the company. And the special payment status. Why special payment status? I am saying one that the standard वेज टाइप का मतलब क्या है कि इन सारे के सारे केसेस के अंदर एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर पेमेंट, उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, बट लाइक व्हेन द एम्प्लॉय इज गॉट टर्मिनेटेड तो उसका नो एंटाइटलमेंट मतलब क्या, he is not eligible for payment, this side he is not eligible for payment. That's what we are defining over here. Okay, so don't get confused. Special payment status is this field, these three options. Employment status is these four options, and customer status is this particular one, single option generally, but like you can keep it as blank. Yeah, this is more related to some of the client if they want some special type of scenarios to be created, but generally I mean like yeah, it is written over here, not used in the standard system. सो जीरो ओनली, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो पेमेंट के लिए भी एलिजिबल हो. वंस द एम्प्लॉय गॉट टर्मिनेटेड इन द सिस्टम ही शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट एज वेल. बट आई एम सेइंग हिज पर्सनल एरिया, सब एरिया, एम्प्लॉय ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग शुड नॉट बी अफेक्टेड. मतलब उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए सिस्टम के अंदर, डिलीट नहीं होना चाहिए. बट दिस वन, जब भी हम उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए इन इन्फो टाइप 40 एंड देन इन इन्फो टाइप 0302. देन द 6F. The last one which we were saying was the rehire. Let's say we want to rehire any employee in the system. Back, rehire. What should we keep here? What should we keep? Either we can keep 0 as well, and we can keep 9 as well. Okay, we can keep 9 as well, or either we keep 0 as well. Either one is fine, but let's take 9 in this scenario. What should be this option? अब मैं रीहायर कर रहा हूँ वापस से एम्प्लॉय को, तो क्या लिखूँ यहाँ पे? Employment status, right? So for checking the employment status, we will check this one, second row or second paragraph. Which one? Rehire कर रहे हैं, right? What should be his employment status? It'll become 3 again. It'll become 3 again, right? हम वापस से rehire कर रहे हैं. अच्छा, rehire का मतलब क्या है? क्या मुझे वापस से उसका employee ID जनरेट करने की जरूरत है क्या? नहीं. एम्प्लॉय आईडी तो वही रहेगा. एम्प्लॉय आईडी मैं जैसे ही डालूंगा, मैं इसको रीहायर, आई एम नॉट डूइंग द इनिशियल हायरिंग अगेन, आई एम रीहायरिंग द एम्प्लॉय. किसको मैं रीहायर कर रहा हूँ? जो कि टर्मिनेट हो चुका है. So someone who got terminated in the system, I'm rehiring that employee only. And what should be the payment status in this case? Should he be allowed for the payments or not? He should be allowed for the payments, right? Yes. So 1. Again, personal area, sub area and all those things should get affected. और info group values कौन सी लूंगा मैं इसके लिए? जो 1F मैंने कल सेट करके रखी हुई थी. Which one? 1F, rehire for. This one should also get executed. So I'm keeping the screen as it is as of now, so that this should be there in the recording. It needs to be configured with these options only. Okay, generally termination action के अंदर you cannot keep it as 3 or you cannot keep it as 1. Otherwise वो terminate होने के बाद भी उसका system के अंदर बैंक अकाउंट और सारी details रहेंगी, but still he would be eligible for the payment. So that's why generally we have to keep very good eye on it that termination के बाद में he should not be eligible for payment. Okay, क्योंकि generally हम employees को execute करते हैं तो it is I mean they got executed based on to the payroll area. So it has to be taken very well care of. Okay, now let's save this one.
So personal action type got saved. Go back, go back. Now the next step after that is setting up an action menu. So we can cross this one. We don't want this one anymore. Or generally, yes, one more thing. We have to create reasons for personal actions also. Reasons for personal actions. Where do we create reasons for personal actions? We create reasons for personal actions over here. Okay. So what is the menu path that we follow generally in this case? We follow the same menu path. Instead of personal action types, create reasons for personal actions. In the actions only, create reasons for personal actions. Okay. So here what we will do, here we will take our action type and then we will define the different types of reasons. कौन से हैं हमारे action type? We have first 6A, अभी जो अभी अपन ने create किया. Which one was that? So we can scroll down and can also see over here this one 6A. So let's first define it for 6A. So let's say I want to define three different types of personal action reasons, right? One is the new hire. Again 6A का मैं दूसरा reason define कर रहा हूँ. अलग अलग reasons हो सकते हैं. Something, it can be something, you can give anything. New assignment. And generally you can also give something like new contract assignment. New contract assignment. Let's name it as new permanent assignment. Or you can also enter like something like full-time hire, all those things. So इसको copy कर लेते हैं. Here I want to define which one. Let's say अब मेरे को define करना है 6B के लिए. 6B के लिए. 6B के लिए. 6B is what? This one. 1B was 6B, promotion, right? So यहाँ पे मैं एक define कर सकता हूँ annual promotion. Quarterly promotion. And let's take two only. We don't have generally, I mean, it's not important to take. We have to have reasons, but it's not important to take 4 5. अपन एक दो भी ले सकते हैं. It's absolutely fine. What about 6C? Transfer. No, let's say normal transfer. What about 6D? This is nothing but the sequence, okay? So like in this case, I'm creating three sequences. तीन तरह के reasons मैं create कर रहा हूँ.
इस केस के अंदर मैं दो तरह के रीजंस क्रिएट कर रहा हूँ फॉर 6B, एंड इस तरह के इस चीज़ के अंदर मैं दो एक ही रीज़न क्रिएट कर रहा हूँ फॉर 6C, एंड देन एक ही रीज़न क्रिएट कर रहा हूँ फॉर 6D. 6D is what? 6D salary increment. So normal appraisals or something. 6C, again let's say I'm saying maintaining termination only, or we can maintain couple of other ones. And 6F, again I'm saying rehiring employees. Rehiring employees. Save this one. So this is how we generally can create the different types of reasons for personal actions, right? We will be able to see the reasons, generally reasons कहाँ show होते हैं. We can be able to see it in the system. Go back, go back. Now we have to go to the change action menu. The next step is action menu sequence. Generally the menu path is this one only, but apart from create from reasons for personal actions, we generally go to change action menu. Change action menu. So by default, the action menu that you will be taking would always be zero. यहाँ पे जो आप action menu लोगे, it should always be 0 0 only. You would be maintaining everything for 0 0 only. You don't have to do any kind of changes over here. इस field में तो आपको कुछ changes करने की ज़रूरत नहीं है. I'm just explaining कि आपको कौन सी field select करना है आगे जाके. तो here we will select this 0 1 only. So in the action menu, which one? कौन सा action menu? I'm saying 0 1. 0 1. Okay. So in 0 1, let's see, we don't, if in case we don't have any. Okay, so we were already having. Let me delete this one, we don't want it. So we'll, yeah, let's create it once again. In the new entries, अच्छा यूजर ग्रुप क्या है? सी यूजर ग्रुप इज अगेन द सेम थिंग जो मैं 40 ग्रुपिंग ले रहा था. यूजर ग्रुप विल बी द सेम थिंग. अच्छा, व्हाट इज दिस एंड ना. अब अपन क्या कर रहे हैं, ये जो अपने एक्शंस बन गए हैं सारे के सारे, वी आर डिफाइनिंग द इन जब भी मैं PA40 एग्जीक्यूट करूंगा तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए. क्या हायरिंग पहले दिखाना चाहिए, प्रमोशन बाद में दिखाना चाहिए, या प्रमोशन लास्ट में दिखाना चाहिए, या टर्मिनेशन इधर दिखाना चाहिए, या what should be the sequence? So let's say 0 1 action. Let's say I want to first show 6A. सबसे पहले मुझे हायरिंग दिखाना है. 40 0 2. उसके बाद let's say I want to show termination action. So 6C should come next. Let's say 40 0 3. उसके बाद I want to show promotion action. So 6B should come after that. Again 40 0 4. At fourth number I am saying okay, 6C should come after that. 40 0 5 I am saying 6F should come after that. And at last 40, that is sixth number पे I want 6D to come. Save this one. Save. So as of now we are keeping this screen open for the side by side comparison. अब हम क्या करेंगे, अब हम PA40 पे जाके देखेंगे. /o PA40, we are opening a new screen. So see, अब जैसे ही मैंने न्यू स्क्रीन ओपन की तो ये मेरे सारे के सारे एक्शंस जो मैंने कॉन्फ़िगर किए थे ये आ गए. अच्छा, इसका सीक्वेंस देखो. अच्छा, पहले मैं सीक्वेंस क्या मेंटेन करके चल रहा था. सबसे पहले मैंने हायरिंग एक्शन कॉन्फ़िगर किया था, फिर प्रमोशन किया था, फिर ट्रांसफ़र किया था, फिर सैलरी इंक्रीमेंट किया था,
फिर टर्मिनेशन किया था, फिर रीहायर किया था। बट यहाँ पे सीक्वेंस क्या दिखा रहा है? हायरिंग, फिर टर्मिनेशन, फिर प्रमोशन, फिर ट्रांसफर, फिर रीहायर, फिर सैलरी इंक्रीमेंट। ऐसा क्यों दिखा रहा है? बिकॉज दिस इज द मेनू स्क्रीन। यहाँ पे मैं मेनू डिफाइन करता हूँ। डजेंट मैटर कि मैंने टर्मिनेशन कहाँ डिफाइन किया था, नीचे किया था, ऊपर किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैंने वहां पे कॉन्फ़िगरेशन की थी वो की थी, राइट राइट। द कॉन्फ़िगरेशन दैट आई हैव डन वाज 6A 6B 6C 6D 6E एंड देन 6F। बट जो मैं मेनू में सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ, उसी सीक्वेंस के हिसाब से वैल्यूज को यहाँ पे आई मीन दिखाया जाता है। उसी सीक्वेंस के हिसाब से वैल्यूज यहाँ पे अपीयर होती हैं। So if in case, let's say I want to change this one, let's say I want to do it as 6D. I want to show the salary increment and second, and 6C, that is the termination action at last. Enter, save. Now here is my screen, अभी ये है. I'll execute it one more time. Slash in PA40. Now we'll see that. ना सबसे पहले अब मेरा हायरिंग है, फिर मेरा सैलरी इंक्रीमेंट आ गया, फिर मेरा प्रमोशन आ गया, फिर ट्रांसफर आ गया, फिर रीहायर आ गया, एंड टर्मिनेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट में आ गया. So this is how you generally define the action menus through the help of this particular screen. Okay, and that's here we conclude the that's how we generally configure the different types of actions. ओके, सो अब मुझे किसी भी एम्प्लॉय को सिस्टम के अंदर हायर करना है. आई कैन सिंपली सिलेक्ट हायर. आई कैन सिंपली go by 01. I can take up a start date. Let's say I would want to take up a start date as 1st of January 2024. I'll hit enter. I'll execute this one, and automatically personal number generate हो जाएगा, because in the number range we have defined the same thing. So now I can select. Now here you can also see this thing कि hiring जब अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये reason for personal actions आ रहे हैं: new hire, new permanent hire, new contract hire. So these were the things that we have defined, right? So new hire. Then if you want, you can take reference personal number. This is in the case of new rehire that you generally do. Here you will take the positions, the one that you have created in the system. कहाँ पे? जब अपन org structure create कर रहे थे. Remember when we were creating org structure, we have created couple of positions over there. What was our org structure? Our org structure was this one, Vermouth Life, or we have created. Sorry, can you hear me? Yes, sir. Yes. So let's say we want to take this executive position. Okay. Personal area, again, which personal area? कौन सी geographical location के लिए? The one that we have created earlier in enterprise structure. Remember? Like here we have created Gujarat, here we have created Karnataka, here we have created Maharashtra. So let's say we want to take Gujarat. Employee grouping, कौन से employee group के लिए हमको hire करना है? We have created how many? We have created E, F, G. Okay, let's say I'm hiring for permanent employee, and here I'm hiring for subgroup. Let's say permanent salaried employee. Okay, once I hit enter, okay, it is telling me not available for the start date of the info type record. Okay, so in this case, we have to we have to check the org assignment once again. Okay, so but generally here I mean here it is, we generally configure. Will end the today's session as it is, but tomorrow we will see that through the help of these PA40 actions, how can we hire new employee in the system? How can we terminate employees? How can we rehire them? How can we transfer and perform different types of actions? Let's say I don't want to. Let's say a user is user को क्या चाहिए कि let's say they don't want a transfer action over here. What should we do in this case? We simply, in the action menu only, in the action menu, we simply can go over here with the user group 40.
we can simply erase the transfer action from here. So वो back end में configured रहेगा, but वो menu में नहीं दिखाएगा आपको कहीं पे भी. So now if I execute the PA40 screen once again, here this one. So अभी transfer दिखा रहा था. Now if I execute this one once again, so now transfer is gone. I have only these many actions. So this is how you generally create the list of action info types. सबसे पहले आप info group अगर interview में पूछते भी हैं तो generally first you configure the user group dependency menus. Then you configure what? Then you configure the different info groups. Here, the different info groups. Then you set info group modifier. Then after info group modifier, you generally create personal action types जहाँ पे आप employment status, special payment status ये सब define करते हो. Then after that you create different reasons for personal actions, and then after that you create action menu sequence. Sequence क्या होना चाहिए? कौन से sequence के I mean what should be the sequence of all the personal actions that you have created. Okay, so that's it for today's session. Any doubt?